Cinderella, a classic fairy tale about a kind, beautiful young woman mistreated by her cruel stepmother and stepsisters, who is eventually rescued by a prince after a magical helper, a fairy godmother, enables her to attend a royal ball. Key elements includes the stepfamily's cruelty, the magical transformation for the ball, a lost glass slipper that identifies Cinderella, and her subsequent marriage to the prince, leading to a happily ever after. Today they have quite a tale to tell. It's maybe one that you know well. A legend that's many centuries old. A story that many others have told. So do enjoy, ye gals and fellas, this classic tale of Cinderella. Do you see that young girl over there, dressed in tattered clothes? That's Ella. Well, let me tell you, she hasn't had an easy life, but she makes the best of it, always willing to share what she has. Here, my little friends, I'm happy to share my breakfast with you. And here, dear beggar woman, it looks like you could use some bread as well, and perhaps some water too. Thank you, young friend. Your kindness will come back to you. I'm sure of it. It's always lovely to see you, dear beggar woman. Enjoy this perfect day. She's amazing a bit. You see, Ella lost her dear mother a few years ago, and her father recently remarried. His second wife, Nodrel herself, came with a pair of rather unpleasant and idle daughters. Sadly, Cinderella's father traveled all the time, so he doesn't see how badly they treat her. They make her work from dawn to dusk, giving her their hands-me-downs to wear, and they make her sit on the hearth among the cinders. That's why they have nicknamed her Cinderella. Oh no, here they come now. Cinderella? Cinderella! Come here at once. Yes, stepmother. You see, mother, it's just like I told you. She's sharing her breakfast with the animals and that nasty old beggar woman again. She's wasting our perfectly good food and water. Don't you know? Money doesn't grow on trees. Silly girl. Of course not, stepmother. I just thought perhaps... No, you didn't think. Not at all. Now back to your chores. My bed still needs to be made. And I have a dress that needs more pearls added to the collar. One can never have enough pearls. And Cinderella, don't forget to scrub the kitchen floor, wash the dishes, and sweep the porch while we're gone. Come on, Pearl. Let's go, Gertrude. We have some serious shoppings to do. The prince wants to wed, or so we are told. How to find a bride? That's the issue now. Let's listen in and see if they can figure out how. I don't know what to say. We have sent you to all the best schools, dancing classes, art events, festivals. You really have
haven't met a single girl that interests you? I'm sorry, father, but sadly, no. Don't be too hard on him, dear. Remember how long it took you to find me? Actually, I think it was the other way around, my dear. You found me. Back to the matter at hand. I would like to find a maiden here in our kingdom. That way, we could spend some time together and really get to know each other. That would be nice, my son. But the father and I don't get out much, so we don't know all of the local single maidens. There's an easy way to solve that. Let's throw a party here at the palace. What a lovely idea! We'll invite everyone to come. We'll have lots of food, music, and dancing. I'll make sure to dance with each young lady. Great idea! You can tell a lot about a person when you dance with them. Passengers, come here quickly. We are going to host a grand and elegant ball. Great news! Invite short and tall, big and small. I'm looking for the perfect bride, the fairest of them all. To see who is the fairest of all. To see who is the fairest of all. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. You're lovely, your name. And hear the news we bring on this day. The king and queen are having a ball. To see who is the fairest of all. To see who is the fairest of all. Come on, come on. Come on, come on. So, is it true that the prince is looking for a bride? Sorry, but we cannot confirm that report at this time. But my local source says that it's true. I hear the prince is rather eager to wed. Y'all have to come to the ball to find out. What's going on? What's all the excitement? What's this? Oh my goodness! The king and the queen are having a ball. That's curious. I'm looking for the fairest of all. Finally, it's time for the prince to find a bride. After all, he's not getting any younger. Oh, mother, how exciting! I can wear the new gown with pearls. I'm sure he will notice me. After all, I've always dreamed of being a princess. Really? I'm sure he will pick me over you. What can you be thinking? Cinderella! Cinderella! Come here at once. We require your assistance. Yes, stepmother. What is it? Well, first of all, help us with all these packages. Hurry, Cinderella. My arms hurt. Now listen carefully, Cinderella. We haven't much time to prepare. The king and queen are having a ball. We heard the prince will be looking for a bride, and he must pick one of my two darling daughters. We'll need your help to get ready. There is so much to do. Did you add those pearls to my dress yet, Cinderella? I'm sure those pearls will catch the prince's eye. I will get to it right away. And I need to learn to watch rather quickly. Oh, I will never be able to dance with the prince. Here, I can show you. Oh, how exciting. I wish I could go too. Ha! You? Why? Whatever you can be thinking. What could you possibly wear? That old tattered dress?
go to the ball. I'm sure the prince is a wonderful person. But why would he ever choose me? I couldn't even catch his eye. I shouldn't think this way, and I certainly won't let this ruin my night. After all, I still have a lot of work to do. Good evening, Cinderella. Do you recognize me? No, maybe. Wait, yes I do. My dear beggar woman, but you are dressed so beautifully. Are you going to the ball too? Oh no, my child. I have more important things to do tonight. I'm here to help you get ready. But that's impossible. I can't go to the ball. I don't have a way to get to the palace or anything to wear. All in good time, my dear. After all, I'm your fairy godmother, so anything is possible. Oh my goodness, a fairy godmother? I couldn't wish for such a night. I shouldn't dream of such a thing. And I won't believe it till I see it. Oh, my dear Cinderella, I will teach you never to use those words. Couldn't, shouldn't, or won't. I'm here to show you that dreams can come true. To the garden you go for a pumpkin. Make it round as a pink as can be. Then the golden coach you say when you bring it back to me. Now you say it, now you don't. Listen to my words now, listen very well. Nothing as it's in when I finish my smell. Now you think you say it, now you think you don't. Never say a word, couldn't, shouldn't, or won't. Turn those my shelter into fine horses. That's of course it's quite hard to believe. And the cat there at the side soon will be your coach, your guide. Now you say it, now you don't. Listen to my words now, listen very well. Nothing as it's in when I finish my smell. Now you think you say it, now you think you don't. Never say a word, couldn't, shouldn't, or won't. Never say a word, couldn't, shouldn't, or won't. To finish you off, still one thing to do. Here, in my pocket, 2 dainty new shoes. These sparkling slippers should fit just right. But be warned, you won't have all night. You will meet the prince. He will be entranced. And yes, he will certainly ask you to dance. But as the clock strikes 12 midnight, the spells will be broken and you will have to take flight. Oh godmother, how could I ever thank you? Be off with you, my child. Have a magical evening. And remember, the spell only lasts until midnight, when all will go back to the way it was. Turn into a coach instead. Fine horses appeared to lead the way, and the cat became the driver they said. The animals watched with gasps and shied as Cinderella was transformed right before their eyes. Her hair was done up with a glistening crown,
and jewels were added up one side and down. A radiant beauty with a fabulous glow. She was just about ready to go. Think I hear a waltz. Oh yes, my dear, a waltz. Come dance with me, 1, 2, 3. Lovely flowing waltz. The music has begun. Come dance, everyone. Come dance with me, 1, 2, 3. Lovely flowing waltz. We'll sway from left to right. Perhaps we'll dance all night. And since I love to waltz, oh yes, my prince, to waltz is just as me glowing this lovely flowing waltz. Now let us both pretend this fairy tale won't end. Come dance of me sewing this lovely flowing waltz. We'll sway from left to right. Perhaps we'll dance all night. All night. Oh yes, the hair a waltz. Oh yes, my dear, a waltz. In any key, 1, 2, 3. Lovely flowing waltz. The music almost done. We're having so much fun. Come dance with me, 1, 2, 3. How I love to waltz. Who is that lovely girl? I don't know, I've never seen her before. She seems to have captured our son's heart. It certainly seems so. I don't recognize that girl. No, neither do I. Well, she must be an out of the towner from another kingdom or something. I know. How did she even get an invitation? That's not fair. I wonder where she does her shopping. I don't know what to say. I have never felt this way before. What's that? What am I hearing? Oh, that's just the clock tower bells, ringing the magical hour of midnight. But that's not possible. I feel like the evening has just begun. I must go. No, you can't. We have just met. Please, stay for another dance. Oh, I'm so sorry, my sweet prince. It's been lovely. Really, really lovely. But I don't even know your name. Wait, come back. Someone stop her, please. The rest of the evening, the prince was distraught. How would he find her? He thought and he thought. The villagers left as the party closed down, but they looked for the stranger all over town. The only thing reportedly seen was a young housemaid running away unclean. Look, my prince, look what I've found. Her sparkling slipper was left on the ground. Then tomorrow, my friend, we shall search far and wide, for that very slipper belonged to my sweet bride. The very next day, they went all over town, for if the shoe fit, the prince would offer the crown.
be denied. I'm looking for my bride. I'll not be satisfied till every maiden's foot I tried. It cannot be denied. It's looking for his bride. He'll not be satisfied till every maiden's foot he tried. If the shoe fits, if the shoe fits, if the shoe foot fit inside, she will become my bride. If the shoe fits, if the shoe fits, if the shoe fits, she'll wear it. He'll go from door to door. It's really quite a chore. Who knows how long before I find the girl that I adore? He'll go from door to door. It's really quite a chore. Who knows how long before I find the girl that I adore? If the shoe fits, if the shoe fits, if the maiden's foot fit inside, she will become my bride. If the shoe fits, if the shoe fits, if the shoe fits, she'll wear it. When all is said and done, if I have found the one, we'll be inviting everyone to join us in the fun. When all is said and done, if he has found the one, we'll be inviting everyone to join us in the fun. If the shoe fits, if the shoe fits, if the maiden's foot fit inside, she will become my bride. If the shoe fits, if the shoe fits, if the shoe fits, she'll wear it. If the shoe fits, she'll wear it. Wait, my prince. There are two more maidens who need to try on the shoe. Obviously, it will fit one of them, as all the other girls in the town have tried and have been unsuccessful. Of course, my lady. Let's give it a try. Me first. Ouch! That hurts. It doesn't fit you because it was made to fit me. I will make it fit. I will make it fit. I will make it fit. I'm sorry, but this obviously is not your shoe either. Please let me try again. That's it, the end. My love is lost to me. How will I ever find her again? We have tried the slipper on every maiden in the kingdom. Oh no, your highness, you have not tried the shoe on every maiden quite yet. Oh, beggar woman, there is no way I danced with you last night at the ball. I believe I would remember that. Cinderella, Cinderella, could you please bring me a drink, a nice sip of water? Of course, it would be my pleasure, my dear beggar woman. There, your highness, there is yet one another young maiden in your kingdom who needs to try on that stunning slipper of yours. Oh, that's ridiculous. That's just our housemaid Cinderella. There's no way she was dancing at any ball last night. And there is no way I am really a beggar woman either. Come here and have a seat, Cinderella. Of course, my sweet prince. Talk about if the shoe fits. See, I even have a matching slipper here. I saved it. I have finally found her. She is an angel, gentle, kind, lovely, and intelligent. Well, my dear Cinderella, my sweet, darling stepdaughter,
What do you suppose is to become of me, your humble and gracious stepmother, and your loving and adoring stepsisters? My mother would want me to forgive you for your lack of kindness, generosity, and love. So I will do that. Cinderella, would you be interested in living happily ever after with me? Oh yes, I certainly would, my sweet prince. And they all lived happily ever after. Once upon a time, very long ago, there was a young maiden with a voice as clear as snow. Then she met a prince, and they fell in love. On a special wedding day, the sun was right above. Once upon a time, we hope you enjoyed our tale with rhythm and with rhyme. Once upon a time, join us as we dance and sing. Once upon a time. Once upon a time, very long ago, lived a fair young maiden with a voice as clear as snow. Then she met a prince, and they fell in love. On a special wedding day, the sun was bright above. Once upon a time, we hope you enjoyed our tale with rhythm and with rhyme. Once upon a time, join us as we dance and sing. Once upon a time. Once upon a time, we hope you enjoyed our tale with rhythm and with rhyme. Once upon a time, join us as we dance and sing. Once upon a time, a time. सुन रे सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा, जाने कहाँ इसे भूल गया, नहीं कुछ भी है मुझको पता। तेरे पायल में मैंने ढूंढ लिया तेरे कदमों तले सजनी, प्यार किया तो जान गया ये मुश्किल है कितनी, मेरी सांसों में तेरा प्यार बसा, आँखों में तुम्ही सजनी। सुन रे सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा। कोयलिया तू कह दे तो तुझे गीत सुनाऊं मैं, नागमणि तेरी नागिन सी जुल्फों को सवारूं मैं, चंद्रमुखी तुझे नींद नहीं तो लोरी सुनाऊं मैं, ठंडी हवा नहीं लग जाए तुझे चुनरी उड़ाऊं मैं, मेरे प्यार की जो बात है कानों में बताऊं मैं, तेरे कदमों के जो निशान है यादों में बसाऊं मैं। सुन
प्यारी सखी ये दिल कहीं खोया है मेरा। की माँ का छोटा सा हंसता खेलता परिवार, सबकी प्यारी एक बिल्ली नाम शिल्पा जो हरदम म्याऊं म्याऊं करती पूरे घर में घूमती रहती थी। शिल्पा किसी से प्रेम करती थी तो वो थी घर की बहू रानी, परंतु मुसीबत ये थी कि बहू मालती किसी से घृणा करती थी तो वो थी शिल्पा बिल्ली। सभी की प्यारी बहू अपनी करधनी में चाबी का गुच्छा लटकाकर पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती थी। कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी रसोई घर में सो गई। अब शिल्पा बिल्ली के मजे, कभी दूध चट तो कभी मलाई पट। अब बहू रानी परेशान सासू जी की डांट से। नादान बहू ने सोच लिया बिल्ली का उपाय, सोचा कुछ और हुआ कुछ। तो आइए चले देखते हैं शिल्पा बिल्ली का आतंक। धन्यवाद। बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है।
बैटरी नहीं। ओहो, कितना काम पड़ा है। उफ, ये शिल्पा भी जब देखो तब बीच बीच में मरती रहती है, मरी निकलती भी नहीं, जब देखो तब मियाओ मियाओ करती ही रहती है। अरे यार, देखो ना, ये मार रहा है। मम्मी मम्मी भूख लगी है। बिल्ली बिल्ली रानी बड़ी सियानी, घर में उधम मचाती है, दूध मलाई रबड़ी सब चट कर जाती है, फिर भी हमें प्यारी लगती है। बड़े यार शिल्पा की बड़ाई करने वाले, तुम्हें कुछ खाना है या नहीं, या तो सारा दिन शिल्पा के साथ ही खेलते रहो। मुझे बहुत काम है, इस शिल्पा को मेरी नजरों से दूर करो। गंगूबाई, ओ गंगूबाई, जरा इधर आना। आई मालकिन। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। गंगूबाई जरा जल्दी आ। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने तू आई है यूपी बिहार लूटने। ना पैसों का खजाना ना सोने। जी मालकिन। तुम लोग भागो यहाँ से। माँ जी, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, इस शिल्पा ने जरूर कुछ किया होगा। एक लात मारती हूँ। आई मालकिन। दादी दादी, मम्मी हमें हरदम डांटती रहती है। आज तो पता नहीं क्या हुआ, हमें जोर से थप्पड़ कर दिया। दादी, हमने कोई सामान भी नहीं लाया। दादी, ये शिल्पा का गुस्सा हमारे ऊपर उतारती। दादी, ये शिल्पा की करतूत की वजह से हमें हरदम डांट पड़ती है। हे भगवान, अब मैंने क्या कर दिया? सारे दिन घंचक्कर की तरह काम करो, ऊपर से सब कोई ए मालती कह के ताना सुनाए। बहू, बच्चों को डराने की क्यों मैंने तुम पर चढ़ा? आइंदा
साथ इस मरी बिल्ली को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, इस शिल्पा ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रुक, अब मैं तेरी कब्र तैयार करके ही रहूंगी। रुक तू। अभी तो तू दूध पी, बाद में मैं तेरे को बताती हूँ। अरे मेरी लाल पीली मिर्च, आज किस पर जल भून कर बैठी हो? अजी सुनते हो, आज मैं इस कबरी टबरी को भगवान के पास पहुंचा कर ही रहूंगी। ये कबरी टबरी कौन है? क्या तुम्हें दूसरी बिल्ली चाहिए क्या? आपकी माँ की लाडली वो शिल्पा बिल्ली, घर में सबकी प्यारी, ये दोनों बच्चे जाए भाड़ में। मैं काम धंधा करूँ या फिर इन सबकी रखवाली करूँ, ऊपर से सारे दिन ताने सुनने को मिलते हैं इस मेरी बिल्ली के पीछे। मुझसे अब और नहीं सहा जाता, मुझे मेरे मायके छोड़ आइए, और जब मैं अपने मायके चली जाऊँ तब संभाले अपने इस घर को। ये सब मिलके तुम्हारे नाक में दम न कर दे तो मेरा नाम बदल देना। मालती, फिर तो तेरा नया नाम क्या रखूं? तू मुझे छोड़कर चली जाएगी मेरी लाडो, तो मैं दूसरा विवाह रचा लूंगा। ऐसी गलती मत करना, मैं भूत बनकर तुम सबको डराऊंगी, सबसे ज्यादा तो इस मेरी बिल्ली को। अरे मेरी चमक छल्लो, गुस्से में तो तुम और भी प्यारी लगती हो। इस बिल्ली के कारण तुम क्यों जाओगे अपने मायके? इसे ही भेजेंगे इसके मायके। चलो अब गुस्सा थूक दो, और जो बची कुची रबड़ी है तुम भी खा लो, मुझे भी खिला दो, दोनों का मन मीठा हो जाएगा। ये मरी छोड़े तब न खिलाओ, ये रहने देगी तब खिला पाऊंगी ना। लो, रबड़ी के बदले मेरा सिर खा लो। बाप रे बाप, आज तो मेरी घरवाली बहुत गुस्से में है, यहाँ से तो खिसकने में ही भलाई है। इस बिल्ली को कैसे ठिकाने लगाऊं? एक काम करती हूँ, मैं इसके दूध में जहर मिलाकर इसे मार देती हूँ। पर एक समस्या है, जहर लाऊं तो लाऊं कहाँ से? नहीं नहीं, ये उपाय काम नहीं देगा। एक काम करती हूँ, मैं इसे कोई भारी चीज से पीट कर ठिकाने लगा देती हूँ। मनिया, ओ मनिया, एक कटोरे में दूध लेकर आओ। जी लाए मालकिन। अरे जरा जल्दी दे यार। शिल्पा, राम राम, ये क्या हुआ? शिल्पा मर गई? हरे कृष्णा, बहुरानी ने बिल्ली को मार डाला। ये तो घोर पाप है, घोर पाप। मैं तो कोई काम वाम नहीं करने वाली। मैं भी कोई काम वाम नहीं करने वाली। गंगू भाई, एक पान लाना। माँ
जी मैं क्या करूं? इस शिल्पा ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे गुस्सा आ गया। अम्मा अब क्या करें? मैं तो खाना वाना कुछ नहीं बनाऊंगी। मैं भी खाना वाना नहीं बनाऊंगी। बुढ़िया को चक्कर आना ही सही है। अम्मा अभी तो आपने कहा आप ना कुछ खाओगे ना कुछ पियोगे, फिर पान लीजिए अम्मा। अम्मा अब तो पंडित जी कोई सलाह दे सकते हैं, उन्हें ही बुलाना पड़ेगा। पंडित जी, ओ पंडित जी, आप कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। दिल की सुन कमेंट्री यार। पंडित जी, अरे रमेश, अरे रमेश, हे हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुए? अरे रमेश, तुम्हारे घर में ये कैसे हुआ? पूरे मोहल्ले में हल्ला है कि बहू ने बिल्ली को मार दिया। अब तुम क्या करोगे? अरे बिल्ली की हत्या हो जाती है तो प्योर 24 कैरेट सोने की बिल्ली बना के देनी पड़ती है। अरे रमेश, तेरी बीवी के पास तो 9 लाख का हार पड़ा होगा ना, उसे निकालना पड़ेगा। मैं नहीं देने वाली अपना 9 लाख का हार। अपने दोस्त से कहो कि वो अपनी बीवी से 9 लाख का हार लाके ले। क्या? मेरी बीवी का, वो भी 9 लाख का हार? नेवर नेवर। आइए पंडित जी, बैठिए। गंगू भाई, मनिया, चेयर लगाना।
तिजोरी खोलिए और नरक का रास्ता बंद करिए। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था शिल्पा को मारने का। शिल्पा को तो मार दी, अब इरादा फिरादा कर रही है। बहन क्या बताए, हत्या का योग है। अब तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करनी पड़ेगी, पूजा पाठ भी करना होगा, काफी खर्च है। क्या काफी खर्च? ला अब तेरे मायके से। मालती मत रो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बिल्ली ला दूंगा। नहीं चाहिए मुझे कोई बिल्ली। पंडित जी, कितने तोले बिल्ली बनाकर दान करनी पड़ेगी? शास्त्र के अनुसार तो बिल्ली की वजन की बराबर की होनी चाहिए, लेकिन ये तो कलयुग है। चलिए 10 तोले में काम चला लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। अरे पंडित जी, इस बिल्ली के पीछे तो हम लुट जाएंगे। हाय राम। क्या 10 तोला? काहे की हमारी मर्जी? 10 तोला मतलब 10 लाख। दादी चलिए ना, कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आप भी चलिए ना। अरे चुप करो तुम दोनों। कुछ सब्जी भाजी है क्या? अब क्या करें, सहन करना ही होगा। माँ दिल पर पत्थर रख के तिजोरी से सोना निकालिए, मैं सामान की व्यवस्था करता हूँ। गंगू भाई, हाँ गंगू भाई, मेरा औचकन तो ला कर देना। लाई मालिक। ठीक है पंडित जी, आप सामान की लिस्ट बताइए। रमेश, सामान की लिस्ट लिखना। हाँ जी बोलिए। हाँ तो लिखिए, 1 बोरा चावल, एक बोरा दाल चना और 5 सेर देसी घी और 6 पैकेट रॉक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि टाटा नमक नुकसान करता है ना। और 5000 दक्षिणा, बस उतने में काम चला लेंगे। इसमें कुछ कम नहीं हो सकता पंडित जी? कुछ कम नहीं हो सकता। क्या करूं माँ जी, इस शिल्पा ने मुझे इतना परेशान किया था कि मैं क्या ही बोलूं। मैं तो कहती हूँ कि सोने की बिल्ली बना के दे ही दीजिए, तिजोरी में ही तो पड़ा रहता है। दूध, दही, रबड़ी के नुकसान से तो बच जाएंगे। यार बहू, तुम्हें सोने और रबड़ी में भी अंतर पता नहीं है। हाँ, सोने की बिल्ला बना कर दे दो। पारा है ना सोना, तेरे मायके से ला रखी थी क्या? अरे चुप करो, तुम्हें क्या पता सोना कितना महंगा होता है। 1 तोला सोना याद कर, रात भर नींद नहीं आती। हाँ बहुरानी, सोना तो बहुत महंगा होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा पंडित जी कहते हैं वैसा तो करना ही होगा। शिल्पा, उठ ना शिल्पा, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी शिल्पा। मेरी सास मुझे ताने मार मार के मार देगी। उठ जा शिल्पा, मेरा सोना बचा ले, मैं तुझे रबड़ी भी खिलाऊंगी, नहीं मारूंगी। उठ जा शिल्पा, उठ ना शिल्पा।
अरे बाप रे। अरे 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 अरे, मेरा तो सोना बच गया। वाह शिल्पा, तूने तो मेरा सोना बचा लिया। वाह, मेरा तो सोना बच गया। इतना सारा सामान बच गया, साथ ही दक्षिणा भी बच गई। पंडित जी, अब तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी, चिंता की कोई बात नहीं है। आपने अपना कर्तव्य निभाया है। आपके आशीर्वाद से बिल्ली मरी नहीं, नहीं तो लोग कहते कि पंडित जी के तो मौज हो गए, सोने की बिल्ली लेकर गए, चारों ओर हल्ला हो जाता, फिर चोर आपके पीछे पड़ जाते, आप भाग भी नहीं पाते, फिर आप अमृत अमृत कह कर बुलाते। और आपको तो पता ही है, मैं तो आपसे भी ज्यादा डरपोक हूँ। सोना फोना जाए भाड़ में। मैं बिना बुलाए नहीं आया हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। ऊपर से आज ये लोग ने खाना भी नहीं बनाया। आंखों के सामने से सोना दक्षिणा सब चला गया। आज किसका मुंह देखकर उठा था? मुझे तो चक्कर आ रहे। आप चक्कर तो मत खाइए, चलिए चलिए चलते हैं यहाँ से। इन लोगों का मुंह देख के कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ चलो घर चलो। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, सारा काम भी पड़ा है। मैं तो चली खाना बनाने। मैं भी चली खाना बनाने। इस शिल्पा ने तो सबके पेट में चूहे दौड़ा दिए हैं, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर अप डाउन कर दिया है। मम्मी खाना दो ना, जोर से भूख लगी है। आप शिल्पा को मत मारना। धन्यवाद।
ढाले 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 ए माता ढाले 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 ए माता ढाले 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 ए माता ढाले 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 काले दाई काले दाई काले दाई काले दाई काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई काले दाई ले लगा एक काले इष्ट कोट काले दाई ले लगा एक काले इष्ट कोट हसता आणि नाचता पाणी देखी दाई ना खोट ठुंग ठुंग छतिया खाले अंग सानी 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 हसतो बेईमानी मानी मानी काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई बसंत नहीं बसना खोच यहाँ लोलाएर यूं हो मेरो प्राण बंधा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घर बसंत नहीं बसना खोच यहाँ लोलाएर यूं हो मेरो प्राण बंधा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घर एउटा फूल फूल यहाँ धरतीमा बगाउँछ एउटा बत्ती बल यहाँ जगत जगमगाउँछ एउटा फूल फूल यहाँ धरतीमा बगाउँछ एउटा बत्ती बल यहाँ जगत जगमगाउँछ सुख शान्ति मुस्काउँछ यहाँ सधैँभरि लुका मारी खेल्छ जुन यहाँ रातैभरि यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो माइती घर माइती घर बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो माइती घर माइती घर माइती घर बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो माइती घर माइती घर by Farhan Ansari. In guitar, Tanveer Biswas, Mehboob Ali, Sachit Sarkar. In lead guitar, we have Rhythm Maji. Bass guitar, John Diali, Ashwin Gupta. And the singers are Swastika Mandal, Tanveer Biswas, and Ayush Lama. Ladies and gentlemen, today we feel proud to introduce one of our own very shining stars, a young and talented boy, Master Ayush Lama, who has been winning hearts with his melodious voice. He has not only proved his excellence in singing, but has also shown his versatility as a budding playback singer in Hindi, Nepali, and many other spheres of music. हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी
से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। Come on everybody, सैया सैया मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते। तुझे जीत जीत हारो, ये प्राण प्राण वारो, हाय ऐसे मैं निहारो, तेरी आरती उतारो, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। सैया सैया बनके माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं। बैठूं नैया प्रीत के संसार से तर जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया सैया ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्रेम से घूंघटिया देता उठाए। अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नहीं नहीं सुहागन हो गई है तेरी जोगन। कोई प्रेम की पुजारी मंदिर सजाए। सैया 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 हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरे तू है मेरा। Wonderful performance by Ayush Lama. Ladies and gentlemen, he really deserves a louder applause.
जो मुझे तुमको भी खो न जाऊं मैं रात दिन नजरों में तुम हो बसे कह दो जो अब तुम एक बार मेरे हो बस तुम मेरे नजरों में तुम हो बसे बस यूं ही रह जाऊंगा यूं ही बस यूं ही बस यूं ही रह जाऊंगा यूं ही बस यूं ही बस यूं ही रह जाऊंगा यूं ही बस यूं ही बस यूं ही Yo, come on, ladies and gentlemen. Put your hands together for our drummer, Farhan. चूलो जो मुझे तुमको भी खो न जाऊं मैं रात दिन नजरों में तुम हो बसे कह दो जो अब तुम एक बार मेरे हो बस तुम मेरे नजरों में तुम हो बसे तू जा चुका है हाँ मैं रुका हूँ तू जा चुका है So with this, we have come to the end of the concert. And now our principal, Mrs. Shraddha, will be addressing the audiences. All this would have not been possible without the presence of such a great audience. Thank you all for attending today and making this event extra special. Thank you all for giving your valuable time to us. Showcase of talent we have witnessed today. As the final curtain falls on this year's annual concert, my heart is filled with immense pride and gratitude. First of all, I, on behalf of the school management, would like to extend my deepest gratitude to our esteemed guests and media for gracing our event with your presence. Your support truly made this event more special for all of us. I would also like to thank the parents and well-wishers who are here today. Your presence and enthusiastic applause have been the biggest motivation for our students. Thank you for your continued trust and for being such a supportive school community. To our incredible students, the true stars of today's show, your performances were truly incredible. The energy, creativity, and sheer passion you displayed on stage were a true testament to your hard work and dedication. From the mesmerizing dances to the powerful vocal performances, the wonderful acting, you have enchanted us all and brought your immense talents to life. Every single participant, whether on stage or behind the scenes, should be incredibly proud of what you have accomplished. A huge thank you to the dedicated teachers and staffs who work tirelessly behind the scene.
Your tireless efforts in mentoring and rehearsing with our students have once again proven your commitment to nurturing their potential. Your guidance and encouragement are the true foundation of every success we celebrate today. Special thanks to our indispensable backstage crew, our lighting and sound technicians, and the entire technical staff. Your tireless efforts, often unseen by the audience, were the backbone of today's performance. You ensured every cue was hit, every sound was perfect, and every light was just right, creating a seamless experience for our budding stars and the audience alike. A special thank you to our dedicated stage managers and volunteers who kept everything running like clockwork, ensuring smooth transitions between acts and keeping the backstage area organized and safe. Finally, as we draw this wonderful event to a close, let us not forget that our annual concert is more than just a performance. It is a celebration of teamwork, discipline, and the creative spirit that thrives within our school. Let us treasure these moments and the memories that will last a lifetime. On behalf of the entire school, thank you all for being a part of this magical event. Let's carry the spirit of creativity and collaboration with us as we move forward. Until next time, wish you a good day ahead and God bless. Wish you all a joyful and blessed Dashera. Thank you.